दैट्स द पॉइंट ना एक्चुअली, कि बिकॉज आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ रहा है, क्या करिकुलम है आपका, किस तरीके से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी मेंटर्स है वो क्या पढ़ा रहे हैं, बट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें अगर समझ में आ जाएगा तो क्या है कि वी मे बी इन ए बेटर पोजीशन, we may attend the interview in a better way. Also, if we are going to attend any interview, you can at least call to us and discuss about your upcoming interviews, so that we can guide you, we can give you some inputs. And I think I'm again repeating, we may know someone in that industry as well, so it will be helpful. Yes. And this is my one of the I would say passion to educate students. Those could not get the support from the institute for their placement, those could not get the better guidance for their career, and they are lacking in multiple things, because those are the bright students, those are IITians, triple IT, or some good institute students. Certainly they will get the good job, but those are the other categories of the students who will help them. No one will help them, and ultimately they are lagging and they could not get the right job. So that's the main thing. Anyone want to share their input? Nishant? Hello. Yeah, Nishant. Any input, any insight? You are not Actually, sir, audible. my net is not working, so I'll connect it again because I'm not able to see You anyone. just switch off your camera. Maybe your signal will be better. You just switch off your camera. Then you can speak. I think your voice is Am I coming. audible now, sir? Yes, perfect. Am I audible? Yes. Yeah. Sir, I just joined. Can I know the context what you are asking? Just we are just looking what is the feedback in last 3 days. If there is any improvement needed, the chapters which we have given to you is really understandable or not. It's out, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिलेबस सर के ऊपर से जा रहा है, बड़ा सिंपल वर्ड्स समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ No, भी. sir. बहुत अच्छा चल रहा है. बहुत That's अच्छा the point. चल And रहा how है we सर. can सारा अच्छी improve तरीके our से समझ आ रहा है. how we रिलेट भी कर पा रहे हैं अपनी right. जो भी हमने पढ़ा है. So that because जब तक feedback नहीं आएगा हमें भी समझ में नहीं आएगा, because this is our first batch, so we may be correct in our upcoming batches. We can change our course contents as well if it is not really matching the expectation of the youngsters. So that's why I'm just curious about the feedback. Thanks, Nishant. Yes, sir. Divya, Sir, any input? Yeah. I have a little bit feedback. Can I speak, sir? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Okay, sir. Last yesterday we read about various like ESG, and more in depth is not possible because it's just a 6 day like course. But a little bit more would be really helpful because I'm really interested in this topic. Which one? I try to learn things from LinkedIn also by reading. Sir, ESG, the one that Sir I think Ashu for sir, ESG, Anshu sir. Nishant, for ESG, you have to go for the long-term sessions or project or full-time course. That will be very helpful because any of the session which is a 1 day, 2 day, or 1 week session may not be that much insightful. Let's connect Sir, I'm separately. Let's connect me separately. I will yes, give sir. you some insights so that you can go more deeper in the ESG as well. Yes, sir. Right? सर मैं कुछ कोर्सेज भी कर रहा हूँ जैसे TCFDs वगैरह से जो भी इनके होते हैं वेबसाइट से और EAG के कोर्सेज वगैरह, तो क्या वो हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म में? बिकॉज नॉलेज वाइज तो देखो, मेरे को हेल्प कर रहे हैं. निशांत, हाँ is it जी. audible, Nishant, to you? यस सर, यस सर.
देखो ऐसा है, जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक हम जो है इंडस्ट्री को आंखों से नहीं देखेंगे, उसको समझेंगे नहीं, एनी कोर्स इज ओनली सब्जेक्टिव, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको क्लियर कर देंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं है। बट जब तक आप खुद चीजों को फील्ड में जाके नहीं एक्सपीरियंस लेंगे, वो सिर्फ सब्जेक्ट ही रह जाता है, वो सिर्फ एक बुक ही रह जाती है, और वो बुक जो है वो शेल्फ में ही रखी रह जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जी कोशिश करें कि कहीं से फील्ड एक्सपीरियंस या फुल टाइम कोर्स मिल जाए तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। विल कनेक्ट सेपरेटली, निशान, बिकॉज टुडे ओके नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द सेशन। एनी अदर वन पर्सन ओनली कैन यस शेयर देयर इनसाइट। दिव्या, आई थिंक डेफिनेटली यू कैन शेयर। Yes, sir. Sir, this session is quite very amazing, sir. क्योंकि being a fresher, आपको हर stream ऐसे लगता है it's a new stream, हम कहाँ scope मतलब अपना career बना सकते हैं। तो I find it very interesting topic, sir. So मैं सोच रही हूँ कि मतलब आगे मैं इस पे work करूंगी, and this session is really helping me out कि मतलब कैसे कैसे topics I can deal with and I can learn. So this is very nice thing, sir. Nice session. नहीं, ऐसा तो नहीं कि Thank हम you, sir, for सामने this. बैठे, ऐसा तो नहीं है कि हम सामने बैठे हैं और नहीं यू नहीं जस्ट वांट टू गिव द गुड वर्ड्स ओनली। नो नो नॉट सर एंड सर बेसिकली क्या है ना सर, ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन है कि ये वन वे नहीं है, इट्स अ टू वे प्रोसेस कि वी आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड आइडियाज टू यू, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस कि मतलब यहाँ सिर्फ लर्निंग नहीं हो रही है, वी आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज टू यू सर, तो दैट इज You गुड should, थिंग. you should. If you will not share your inputs, insight, your issues, and I will assure you, it's not. We are not ending with this session. Okay. Divya will be always connected with the EHS services for lifelong. Okay, Okay. sir. आप जब भी जहाँ पे भी होंगे, you just connect us and we will try to support you. Or not Actually, Divya, sir, how can any we of member. connect you? My number is there, my mail ID is there. Our office is in Ghaziabad, so anytime you can visit, you can call. And Okay. soon after this session, after this program, we are going to be issue a helpline number first time in India for the EHS officials. Sure, sir. तो वो हेल्पलाइन नंबर डेडिकेटली EHS ऑफिशियल्स के लिए रहेगा कि जिसको कहीं पे भी कोई इशू है, वो एक बार अपना मैसेज डाल दे और फिर उसको जो है हम कांटेक्ट करके एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। सो ऐसा भी हम वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी हैव नॉट येट अनाउंस्ड, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डू। बिकॉज कोई ऐसा, अगर ऐसा आप किसी भी बच्चे के मन में या किसी भी ऑफिशियल के मन में कोई ऐसा नंबर है कि भाई मैं वहां फोन करूंगा और मुझको कुछ हेल्प मिल जाएगी, that is quite amazing. And as a professional I was lacking and at the starting of my career कि मैं किसी को फोन करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करके कुछ इनपुट ले लूं, so that I am relaxed, at least I have some guidance not only on the career but on the issues which we are facing at a certain level of the career of the life. So वो एक बहुत important होता है। और अभी भी मेरे पास काफी बच्चों के या जूनियर्स के फोन आते हैं कि सर मेरा ईटीपी में ये प्रॉब्लम है। अब वो ईटीपी की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? उसका बॉस उसको बताता नहीं है या उसको डर लगता है उससे बात करते हुए। तो उसके लिए वो 5 मिनट का जो डिस्कशन है वो अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसका कैरियर का मैटर हो जाता है कई बार, तो कि उसकी नौकरी ना चली जाए। चलो, इट्स गुड टू हैव द insight from your side, everyone, and thanks for joining. Now over to Khevna, please continue. Yes. Good evening, everyone. So today we are having a session of Dr. Apoorva Saxena. She is environmentalist along with the naturopathist. She has a wide experience in field of PWM, EPR compliances with the leading brands, environmental impact assessment, environmental clearance, TOR and preparations, EB, socio-economic and environment reporting, PWM rules, QPR and EPR compliances, mineral testing, stick emission monitoring, microbiological instrumentation, chemical instrumentation, and lab experience on environmental consequences. She is also one of the founding member and the senior manager
in field of environmental health and safety at EHS services. She has been actively involved in field of research and has presented her work at various reputed national and international platforms. So Dr. Apoorva has gained immense experience under the reputed private as well as government organizations including Vardhan EnviroLab, Wildlife Institute of India, Gandhi Smriti and Darshan Smriti, which is under the Ministry of Culture, Nirmal Ganga Jan Abhiyan and Namami Gange program by Government of India. So it is a very good opportunity to learn one more thing to add in the environment sector by Dr. Apoorva. Over to you, Dr. Apoorva. So before Dr. Apoorva starts, I would like to have just one line for Apoorva. Apoorva is one of our founding members and she has started career as a fresher with us in the field of EHS. And now she is contributing a lot on different aspects, different levels of the organization. And this is what our capacity and vision for the youngsters to handle the projects independently, handle the clients independently, and having a full confidence as a official. So I'm thankful that we have such a great team with us, like Apoorva and other members, and understanding their responsibilities about the organization, about the subject, and continuously learning. This is very important. So over to Apoorva. Take care and give the insights to the youngsters about the EIA and other subjects. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. Thank you, Khevna, for the kind words and for the introduction. Hope I'm clear and loud to everyone. Is it okay? Yeah, okay. So, hope my screen is visible to everyone. So, today we are going to have a session on conceptual facets of EIA. So, first question is from my side to everyone, like how you know EIA? Can anyone tell me anything about the EIA? What is your perspective about the EIA? Ma'am, can I? Yeah, sure. Ma'am, basically, EIA is environmental impact assessment. Like before starting a project, how can we analyze like उसके pros और cons क्या होंगे after setting up that project? So environmental impact assessment is like assessing or assessment of anything like pros and cons of that project, I guess. Okay. Anyone else? I think Bhuvnesh has raised the hand. Divya. Ma'am, Yeah. ma'am, I'm honest. EIA is an environmental impact assessment. It can conduct to starting a new project or to extend or adding some new equipment or some process in the industries or factories. Then again conduct. We need also conduct impact assessment. Okay. Yeah. Okay, Bhuvnesh. Yeah, Divya. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Basically, environmental impact assessment, what I understand by it is that it's not necessary that it has to be on a project level or something. What I understand is that it has to be on an individual level. It's not necessary that it has to be for a project or something. Like on an individual level, how the environment affects us. That is basically what this assessment is about. That how the environment that is around us, everything that surrounds us, how it's going to impact us on an individual level, on an organization level, on an institution level. Basically on a biosphere level, that is like a bigger term, but it starts from an individual level itself. It does not necessarily have to be about a project, I think. Okay, all right. Thank you so much for all your reviews, whatever you know about the EIA. So, in and around, I think in a nutshell, we can't cover the whole EIA or EHS in a 1 day or in a 1 hour session. It requires a whole day or whole week or many months to learn, if either it's any topic.
So we are going to just study about the conceptual facets of EIA. So before starting that, you have shared me the reviews. And again, I have a question to you. Let's recap the terminologies which we are addressing from last two sessions. So these are the some acronymics. So can anyone tell what does these stands for? Like MOEFCC, what it stands for? इट इज बेसिकली मैम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे वर्क करती है. I'm just simply asking you that whole acronymic, that abbreviation. What is like MOEFCC? What is the whole terminology about MOEFCC? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so this is only a recap. Like before last 2 days, जो भी हम चीजें सीखते आए हैं regarding the Dr. Priyank Arya's session from Mr. Anshu's session. So what did the CPCB stands for? Center of Pollution Control Board. Okay, and anyone can tell UDD who want to address this? Urban Development Department. Okay, and NGO? Non-government organization. Okay, then BRSR? So can anyone tell what is BRSR? Like what the terminology it is? What is the abbreviation? Business Responsibility Sustainability Reporting. Okay, nice, Aishwarya. And what is CB? So this is just an exercise like Securities and Exchange Board of India. Okay. Sorry, securities? Securities and Exchange Board of India. Okay. And what is SDGs? Sustainable Development Goals. Okay, and what was that 3 C's for CSR? I think we have just attended that lecture on the BRSR and CSR yesterday. Can anyone tell what was the 3 C's? So I think I can address that. The 3 C's were the clarify, committee and capture, like regarding the BRSR. And can anyone tell about the GRI? Global Reporting Initiatives. Right, okay. Thank you so much. So I think like this emoji or the image I have inserted in this presentation, you are having a question mark on you that why I'm asking these abbreviations to you. So moving next, there are lots of acronyms in EHS or either in any field, and as a EHS manager or you are going to face an interview or anything, you are going to face that. Like we are using a term EIA, we are using a term EHS, we are using a term EMP. So my main point is that you have to just be conscious and you have to just always be attentive, like whatever the acronyms are using, like sometimes we forgot the acronyms, like that AAQ किसी ने use करा, but we don't know that is the ambient air quality. What is EIA? Like अभी भी इस वाले session में we are using many terms, हम काफी terms use करेंगे. So these are the abbreviations. I just want to know you that कि आप इन abbreviations को ध्यान से समझें. It is a suggestion to you. आप being a EHS person, being a EHS manager या फिर किसी भी field में अगर जाते हैं, if you are going to face an interview, if someone is asking you the abbreviations और कोई वो terminology use कर रहा है, so you have to just click on that abbreviations. So that was the main perspective of that query mainly. So just proceeding to the session, environmental impact assessment. तो there are many काफी चीजें आएंगी like सिया, दिया, सेक, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे. That's why the main purpose was कि आपको वो मैं समझा सकूं कि वहां पर कौन से acronyms यूज हो रहे हैं.
ओके सो अभी आपने बताया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो भी आपके रिव्यूज थे, जितना भी आपने पढ़ा है उसके बारे में कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है. So according to the government, according to the guidelines, according to the UNEP, defines environmental impact assessment is as a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to a decision making. आपने जितनी भी चीजें बताई अगर उनको कंबाइन किया जाए, किसी ने बोला कि it is related to the project, someone said कि it is not related to the project, वो एक personal responsibility है, person to person matter करता है. So what the government defines that it aims to predict the environmental impact at an early stage in the project. While we are establishing a project, while we are establishing an industry, we have to do the environmental impact assessment, like whether that industry is going to be harm that environment or how it is going to create some impacts on the environment. That's why we have to use the environmental impact assessment to find the ways and means to reduce the adverse impacts. Shapes projects to suit the local environment, like हमारे जितनी भी geographical या फिर जितनी भी चीजें environment से related हैं, उस पे क्या उसका adverse impacts पड़ेंगे, उसको हम measure कर सकें, so that we can make some decisions to maintain that adverse impacts जो आने वाले टाइम पे effects पड़ने वाला है, या फिर उस environmental या फिर project को establish करने से जो भी impact पड़ेंगे, so that we can know the pros and cons of that, we can mentally prepare or we can physically prepare to maintain all the practices regarding that. So what is the main objectives of EIA? It is to ensure environmental considerations addressed and incorporated into the development decision making process, to anticipate and avoid, minimize or offset the adverse significant biophysical, social and other relevant effects of development proposals, to protect the productivity and capacity of natural systems, so that we can preserve or conserve a natural system. If any industry is going to be established, उससे हमारे नेचुरली सिस्टम को क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, एयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. दीज all areas covered under the environmental impact assessment. Like we can connect it with the while we are doing the EIA, हमें वहां पर एक सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट देना होता है, टॉप कंप्लाइंसेस देना होता है. बिफोर दैट अप्रूवल वी हैव टू शो दैट रिपोर्ट टू द DIA, to the SIA, that is the state environment compliances, and to the DIA district co, so that they can approve that that industry or that project is appropriate to establish in that area particularly. They are not creating any hazardous impact on the society, or they are not creating any harm to the natural system and the ecological processes. To promote development that is sustainable and optimizes resources use as well as management opportunities. So these are the main objectives of EIA. Now, what are the three basic premises, inclusive components of sustainability development? हम कल ESG में भी पढ़ रहे थे ये बात, और जब हम BRSR को भी कनेक्ट कर रहे थे, then we were talking about the sustainability. So what in and around, if we are correlating with sustainable development, so what all the things are interrelating with that? Sustainable development में it affects the social development as well. उसका impact भी बहुत ज्यादा है, और उसका vice versa जो continuity है वो भी social development पे impact करता है, and sustainable development को भी, economic development and environmental development. So these are the three inclusive components of sustainable development, which vice versa and correlatively affects the sustainable development. It is very necessary to understand the links between environment and development in order to make choices of development that will be economically efficient, socially equitable and responsible, as well as environmentally sound. So basically, in and around, अगर हम EIA में देखें, either through the compliances, either through the rules or notifications, हमें हर एक चीज को एनवायरमेंटली साउंड बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं, हमें उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, वो सारी चीजें हमें EIA में गो थ्रू करना पड़ता है. हमारा सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, और कितने लॉन्ग रन के लिए वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा, उसमें आप कौन कौन से कितने भी कंपोनेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट इट मे नॉट अफेक्ट योर नेचुरल इकोसिस्टम.
the Ministry of Environment, Forest, earlier it was, and now it is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, introduced the Environment Impact Assessment on 14 September 2006, which not only re-engineered the entire environment clearance process specified under the EIA notification 1994, but it also introduced a number of new development sectors which would require prior environmental clearance. अभी तक टोटल EIA नोटिफिकेशंस ने नोटिफाई किया है लिस्ट ऑफ 39 डेवलपमेंट सेक्टर्स जो कि कैटेगराइज किए गए हैं अंडर द टू कैटेगरीज विच इज कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी लाइक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी प्रोजेक्ट को दो प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया प्रोजेक्ट ए एंड कैटेगरी बी फर्दर इसको हमने डिवाइड किया कैटेगरी बी को अंडर द टू कैटेगरीज B1 and B2. सो फॉर द कैटेगरी ए we deal it at the central level, and for the category B it is directly goes to the that state level. So for category B it don't require to directly go to the state level. उसके लिए A वाली कैटेगरी को ही स्टेट लेवल पे जाना होता है, B वाली कैटेगरी को दे रिक्वायर first clearance from the state then the central, and B1 and B2 categories को further divide किया गया है. Now the EIA notification further introduced a system of screening, scoping and appraisal, and for the setting up of environmental impact assessment authority that is EIA at the central level and the state level environment impact assessment authorities, that's SIA. एक और अथॉरिटी होती है विच इज कॉल्ड एज दिया, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. सो दोज आर द इंडस्ट्रीज विच कम्स अंडर द MSME या फिर कुछ छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं. दे नीड द अप्रूवल फ्रॉम द दिया देन सिया, देन दे हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम दैट सेंट्रल लेवल to grant environmental clearances. The Ministry of Environment and Forest in the Environment Impact Assessment Authority at central level 25 स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज अभी तक सेटअप की जा चुकी हैं इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. दिस इज द रीसेंट डेटा. सो अभी भी काफी हैं जो इज नॉट फॉलोइंग द EIA और वहां पर कुछ ना कुछ लैक कर रहा है. Introduction to the technical EIA, if we go to the technicality, like how a EHS manager, how a environmental auditor, how a EIA or how a consultant is going to work in the EIA field. So basically it is a process of identifying, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other relevant impacts of development proposal prior to major decisions being taken and commitments made. These studies integrate the environmental concerns of development activities into the process of decision making. So basically जैसे मैंने भी EIA के फील्ड में वर्किंग किया था, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. आपको सारे पेपर वर्क को करना होता है, काफी सारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं. देयर इज अ होल प्रोसेस लाइक इफ यू आर डीलिंग विद अ प्रोजेक्ट और एनी कंपनी, यू हैव टू मेंटेन द पेपर वर्क. Like it also includes the topographical sheet. Like first you have to maintain a topographical sheet in which area that industry is going to establish. By that for that topographical sheet you have to use the GIS system. GIS system के थ्रू आप वो लोकेट करेंगे एंड उसमें भी काफी चीजें आती हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि हम वो एक दिन में या फिर एक घंटे में कवर नहीं कर सकते. लाइक अगर आपने टोपोग्राफिकल शीट बनाया तो उसमें भी लाइक आपको ग्रीन बेल्ट किस एरिया में मेंटेन करना है, how much water you can use for the construction or for that particular project. अभी तक 10 to 12 KLD you can use. And green belt area के लिए you can it is like a buffer or barrier जो कि हमारे जो कहीं पर भी प्रोजेक्ट अगर स्टैब्लिश हो रहा है तो उसमें पोल्यूशन को एज अ बैरियर वो कम करने की कोशिश करता है. दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बेल्ट जो सभी इंडस्ट्रीज को करना होता है ड्यूरिंग द EIA. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं विच इज इंक्लूडेड इन द EIA फॉर द एनवायरमेंटल बैलेंसिंग और फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. EIA has emerged as one of the successful policy innovations of the 20th century in the process of ensuring sustained development. Today, EIA is formalized as a regulatory tool in more than 100 countries for effective integration. Like India में तो है ही ये काफी जगह पर, but India में अभी proper full-fledged way में हो रहा है, but it is not at that extent. तो उसमें भी अलग अलग चीजें हैं कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है, किस वे में है. लाइक माइनिंग इंडस्ट्री के अलग नॉर्म्स हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज के अलग हैं. हर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग EIA के कॉन्सेप्ट और पर्सपेक्टिव्स अलग हो जाते हैं.
The basic tenets of the EIA notification is pollution potential is the basis for prior environmental clearance instead of investment criteria. अगर आप ये इमेज देख रहे होंगे तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट व्हाट बेसिकली इट इफेक्ट्स और व्हाट द कंपोनेंट्स बेसिक टेंट्स व्हिच should be inherited into the environmental impact assessment. So there should be the transparency, certainty, participation, particularity, flexibility, cost effectiveness, credibility and accountability. ये कुछ key points है जो होने चाहिए. So this is a generalized EIA process flow. Just let me zoom it. So there's a process of application environmental screening from submittal by applicant. As I was telling you कि आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो एज अ EHS मैनेजर या फिर एज अ कंसल्टेंट या फिर ऑडिटर जहां पर आपको EIA के सारे प्रोसेसेस को करना है तो वहां पर आपको एक पूरा स्क्रीनिंग होता है लाइक हाउ यू हैव टू फॉर्मुलेट हाउ यू हैव टू वर्क फॉर द EIA. Then first step is the screening. You have to screen that project. Then town and country planning department review of application and screening form. वो एक फॉर्म या ये सारी चीजें होती हैं जिन फॉर्म्स को आपको फिल करना होता है. They require all the details like if you are using that land, वहां पर आप ग्रीन बेल्ट बनाओगे, उस ग्रीन बेल्ट का जो साइज है वो 10 मीटर के एरिया में होना चाहिए. दैट लैंड शुड बी 10 मीटर. वाइड वो कितना भी हो सकता है बट दैट लैंड शुड बी द 10 मीटर. वाटर का आप कितना यूजेज कर रहे हो वहां पर ETP STP प्लांट्स हो गया या फिर DG जनरेटर से DG सेट्स वगैरह आपने लगाया है या नहीं लगाया है, ये सारी चीजें वहां पे इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. Then the next process is the project is feasible or not. EIA category required. The next screening is the EIA required है for which category? Is it is for the category A, category B. Limited EIA required category B. No EIA category C. So standard development application procedure. Next process होता है scoping and TOR preparation. This is a TOR compliances कहलाता है ये. पब्लिक नोटिस एंड पब्लिक मॉनिटरिंग अप्रूवल के लिए होता है और स्कोपिंग स्टडी एंड टॉर. तो एक टॉर कंप्लायंसेस बनाया जाता है लाइक whatever you are doing to set up that industry, are that feasible to the environment or not? Are that friendly to the environment or not? So next step is the impact analysis, mitigation and impact management. Then you have to prepare a EIA report, public monitoring करना होता है, finalize EIA or adjust, decision making. If that is not going to be approved, then you have to redesign, resubmit. Then वो submit होने के बाद you have to prepare a presentation and you have to present that presentation to the DIA, district authority, or if it is not going to the district authority, you have to present it to the CIA or the central authority. Then it will get the approval that this company can be established at a particular area without any harm to the environment or ecology. So, what are the salient features of 2006 amendment to EIA? So environmental impact assessment notification जो 2006 में आया था वो डिसेंट्रलाइज करता है environmental clearance project को, जो कि मैंने अभी आपको बताया category A and category B. So category A basically requires the national level appraisal and category B requires the state level appraisal. Category A projects are appraised at national level by impact assessment agencies, which is called as IAA, and the expert appraisal committee, which is the EAC. And the category B projects are appraised at the state level. After 2006 amendment, the EIA cycle comprises of 4 stages. So there is a hierarchy. I think आपने अगर अपने studies में, if you have done something in environment field, so you have studied the whole EIA process. There is a 10 points or the hierarchy of EIA cycle. So the main 4 stages are the screening, scoping, public hearing and appraisal.
कैटेगरी 1 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, कैटेगरी ए इज रिक्वायर्ड मैंडेटरी एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड thus they do not undergo the screening process. So if they are directly going to the centralized system, they are directly going to the SIA or central assessment authority, so they don't require the environmental clearance or this they require the environmental clearance but they don't undergo the screening process. And for category B it goes the screening process. तो अगर हम इन 4 points को देखें तो under these 4 points category A will not go under the screening process. Category B projects will go under the scoping, screening, public hearing and appraisal. So what I was talking about, the 10 points, these are the 10 points, the EIA process. First one is the screening, like project plan is screened, then scoping, the project potential, impacts, zone of impact, जो मैंने आपको अभी topographical sheet का बताया, which is made from the GIS. You have to mention that. I think there is some question. Yeah, Nishan. कैटेगरी बी में जो 2 कैटेगरीज हैं, B1 एंड B2, B1 में मैंडेटरी है EIA, क्या उसमें स्क्रीनिंग भी मैंडेटरी है? हाँ, उसमें स्क्रीनिंग भी मैंडेटरी है. बी वाला जो कैटेगरी है उसमें स्क्रीनिंग आइदर इट्स अ B1 और B2, both the category requires the screening. For the A category, screening is not required. Okay, thanks. Okay, so the EIA process, screening we have discussed. Scoping is the project's potential impact, zone of impact, mitigation possibilities and need for monitoring. So these are the steps, like first you have to do the screening, then scoping, collection of baseline data, whatever the study area, what is the environmental status of that study area, what is the quality measures and the parameters of air, soil and water. Impact prediction, a positive and negative, reversible and irreversible and temporary and permanent impacts need to be predicted, which presupposes a good understanding of the project by the assessment agency. Mitigating measures and EIA report, in सारे processes के बाद you have to mitigate the measures and you have to prepare a EIA report. Public hearing, on completion of the EIA report we have to go to the public also, like whatever, if that industry is going to be established here, it is not going to harm that local peoples or not. So we have to just check this thing as well. Decision making, impact assessment authority along with the expert consult the project in charge along with consultant to take the final decision. Monitoring and implementation of environmental management plan, assessment of alternatives, delineation of mitigation measures. So these are the things. Last one is the risk assessment, inventory analysis होता है, hazard probability देखी जाती है, and index also I have to mention. Like for the EIA procedure, what are the risk assessments? And overall इसमें एक EMP बनता है, which is the environment management plan, which you have to prepare. Like जैसे आपने एक EIA report बनाया, similarly you have to prepare a environment management plan. How you have to going to establish that industry? What are the measures? What are the risk assessment? What are the economically and credentials? What you are going to use in that environment management plan? So now we are going to know about the stakeholders in the EIA process. So meanwhile we have studied very precisely about the EIA. So can anyone tell me about which stakeholders in the EIA process? Which are the stakeholders which are related to the EIA process? Oh, anyone of you, if you want to. आप कोई भी आइडिया बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं EIA के प्रोसेस में. यस आदर्श. मैम इसमें जो होते हैं मैम, इंडिविजुअल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट. राइट, आई थिंक सो. परफेक्ट. एनीवन एल्स? You can openly share, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, you can just share, because EIA जो बुक्स में पढ़ना और इन फील्ड जाना, अभी जैसे सर ने बोला था ना कि आप एक
फिजिकली आप किसी जगह पर विजिट कर रहे हो, आप वहां पर फिजिकली वर्किंग कर रहे हो, और एक आप घर पे बैठ के नोट्स बनाना या फिर उसको पढ़ना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. ये मेरे साथ भी हुआ था. EIA को जब मैंने पढ़ा और उसको इंडस्ट्रियल वे में देखा, देन दैट इज अ कम्प्लीटली अ साइड बाय साइड डिफरेंट थिंग, अ कॉइन विद अ डिफरेंट साइड्स. तो आपके जो भी मन में आ रहा हो आप बताओ. Which stakeholders are involved in the EIA process? Okay, I think so. Adarsh ने बताया है. I think Anand is saying individuals, government sectors, private organization. Okay, correct. So ठीक है. So those who propose the project, the environmental consultants who prepare EIA on behalf of project proponent, pollution control board, either it's a state or national. Public has the right to express their opinion. अभी जैसे हमने discuss किया, like that local peoples, we have to discuss with the, before preparing that EIA report or before establishing that industry, we have to take a concern from the local persons as well. The impact assessment agency, regional center of the MOF and CC. So these are the stakeholders which are involved in the EIA. So there are different types of EIA, like strategic environmental assessment, which is known as SEA, and regional EIA, sectoral EIA, project level EIA. So these are the different types of EIA. With the difference, like SEA refers to a systematic analysis of the environmental effects of development. Regional EIA में EIA is the context of regional planning, integratively environmental concerns into development planning of a geographic region. तो basically हम geographical से related ही regional EIA में economic from environmental, that is the ECE main consider किया जाता है. Strategic environmental assessment में we basically work on the systematic analysis and the how the decision making is going to work, how the project level, and what are the major alternatives we have to carry on with this strategic environmental assessment. Next one is the sectoral EIA instead of project level EIA. Yes, Adarsh. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो भी मैम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज करती है मैम, प्राइवेट कंपनीज करती हैं इनके असेसमेंट, ये मैम किस अथॉरिटी के अंडर में आती है मैम? ये पर्टिकुलर कहाँ से अप्रूव्ड होती हैं, और इनको रिपोर्टिंग करना मैम इतना जरूरी क्यों होता है मैम? देखो आदर्श, अगर कोई छोटे लेवल का इंडस्ट्री है या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडीज है जो EIA को कर रहे हैं, आई थिंक आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन राइट. आप इसी को पूछ रहे हो ना, कोई भी इंडस्ट्री अगर है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, राइट? आदर्श. यस मैम. हाँ, आप उसी की बात कर रहे हैं ना. अगर कोई छोटे इंडस्ट्री है, हाउ दे हैव टू डू द EIA, लाइक नॉन गवर्नमेंटल वे में. ओके, सो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी छोटे लेवल का इंडस्ट्री है, बड़े लेवल का इंडस्ट्री है, ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स. अभी हम EHS में भी आई एम डीलिंग विद द प्लास्टिक वेस्ट कंप्लाइंसेस, तो उसमें भी एवरीथिंग इज द गवर्नमेंट बेस्ड. अभी भी EIA के लिए भी काफी रूल्स और रेगुलेशंस बनाया गया है. तो जितने भी स्मॉल प्लेयर्स हैं या जो भी हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल कंप्लाइंसेस या उसके अंडर में ही फॉल कर रहे हैं. दे ऑलवेज डू. वो आइदर थ्रू अ कंसल्टेंट या फिर वो अपने आप से ही, मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब दे वांट, जो जियोग्राफी में, लाइक देयर इज अ रीजन ऑफ राजस्थान में भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है, इट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश, उसको EIA कराना मैंडेटरी होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. आइदर दे हैव टू गो विद द गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस या फिर वो कंसल्टेंट के थ्रू कराएगा उसको. बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराएगा EIA को. Thank you, ma'am. So, a project level EIA refers to the development activity in isolation and the impacts that it exerts on the receiving environment. Thus, it may not effectively integrate the cumulative effects of the development in a region. So, these are the 4 categories of EIA basically. बेसिक EIA प्रिंसिपल्स क्या है? एक EIA को while we are going to do the EIA, that should meet at least 3 core values. First one is the integrity, second one is the utility, third one is the sustainability. That integrity should be like, if you are going as a EIA or as a consultant or as a EHS, you should be fair, your objective should be clear, you have to be unbiased and balanced.
that utility. Your utility should be processed and balanced. You should be credible. You have the credible information for decision making. Like I have to do the green belt part. If the person is not doing, what are the measures, what are the rules and norms, we have to follow that. Sustainability, like whatever environmental safeguard results or parameters are working or not. And ideally, an EIA process should be purposive, rigorous, practical, relevant, and cost effective. So these are the 5 things that EIA process should be ideally incorporated. Like purposive, information, decision makers, and results in appropriate levels of environmental protection and community well-being. That should be rigorous, should apply best practical science, employing methodologies. अभी हम काफी चीजें देखते हैं कि ये सारी चीजें ना कभी कभी EIA जब आप फील्ड में जाते हो तो यू ऑलवेज फील कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं हो रही है. इफ वी आर गोइंग टू डू द EIA प्रोसेस, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया में कुछ चेंजेस हुआ, लाइक इफ यू आर डूइंग द पैरामीटर्स और केमिकल या फिजिकल स्टडीज कर रहे हो, आप केमिकल पैरामीटर्स चेक कर रहे हो, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं कि जो हम मिसमैनेज करते हैं. बट दैट शुड बी पर्पसिव, दैट शुड बी रिग्रेस. यू हैव टू वर्क विद द complete credibility, that you have to prepare a complete accurate report. That should be practical, that should be relevant, and EIA should be cost effective, should impose minimum cost burdens in terms of time, finance, and proponents and participants consistent with meeting accepted requirements. These are some objectives of EIA like efficient, focused, adaptive, participative, credible. You should be carried out with the professionalism, rigor जो हमने आगे डिस्कस किया था. You should work with the transparency, integrated. So mainly जहाँ पर भी environment की बात आती है, you have to be clear, you have to be very credible. Like you have to do the thing. Same thing is with the EIA. You have to do with the focused working, with the efficient and participativeness. So moving towards the project cycle, अगर हम EIA में project cycle की बात करें तो generic project cycle include करती है 6 main stages, which is the project concept. उसकी प्री फिजिबिलिटी चेक की जाती है. फिजिबिलिटी क्या है, डिजाइन और इंजीनियरिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, देन उसका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. सो इसके लिए भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान. सो वी हैव टू स्टडी दैट फिजिबिलिटी should include the detailed assignment of significant impacts, and the EIA include the detailed prediction and quantification of impacts, जिसमें आप environmental management plan बनाते हैं. Findings of the EIA should be preferably be incorporated in the project design stage, so that project as well as the site alternatives in the study. If it requires any necessary changes, that can be required, but the project design के stage पर ही वो सारी चीजें discuss हो जाने चाहिए. Yes, Divya. What is the major difference between pre-feasibility and feasibility? As the project, मतलब हम project के before बात कर रहे हैं या in between? जब हमारा एक project concept आया, EIA is basically prior to the industrialization, जब वो establish हुआ, तो आपका प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट जब आपने लिया उसको गवर्नमेंट से ऑथराइज कराने से पहले, दैट इंडस्ट्री कैन बी एस्टेब्लिश और नॉट, वी आर गोइंग टू डू द EIA. तो उस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को बनाने से पहले आपको एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट प्रोजेक्ट इज फिजिबल, लाइक दिस इज गोइंग टू बी फिजिबल एंड दैट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश. देन उसके बाद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट EIA हो रहा है. देन उसके बाद उस फिजिबिलिटी का हमने प्री मेजर्स किए था, देन उसका फिजिबिलिटी प्रोसेस हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मेजर्स उसके अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं. So that practice has always helped the management in assessing the negative impacts and in designing cost effectiveness, remedial measures. In general, EIA enhances the project quality and improves the project planning process. So अगर हम environment management plan भी बना रहे हैं तो it helps us to how to manage everything eco-friendly. Environmental impacts क्या होते हैं इसमें, that environmental impacts resulting from proposed action can be grouped into following categories.
शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लोकली कैसे इफेक्ट कर रहा है वो एनवायरमेंट को, रीजनली कैसे इफेक्ट कर रहा है, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे वो कैसे इफेक्ट कर रहा है. तो द कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट एज स्टेटेड अबव एंड द सिग्निफिकेंस विल फैसिलिटेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी. इसके लिए एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है. दे चेक दैट ऑल द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड स्टेट लेवल EAC होता है टू टेक अ लुक एट द टॉर. जो टॉर कंप्लायंसेस का मैं एक पार्ट बता रही थी, उसमें एक प्रेजेंटेशन बनाया जाता है दैट mention everything regarding the environmental impacts that should be stated above as per the criteria, और वो सारा facilitate होता है by the EAC and SEAC. So these are the type of impacts like policies और strategies में कैसे आपने उसको impact किया नहीं किया, वो कैसे impact कर रहा है EIA में, regional और sectoral development plans में, then project level EIA कैसे affect करेगा. फर्दर वो डिवाइड हो जाता है सोशल इम्पैक्ट में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में. सोशली आप जो लोकल पर्सन्स का हेल्थ, डेमोग्राफी, वर्क हो गया, इकोनॉमिकली मार्केट और टेक्नोलॉजीज को, हर एक इम्पैक्ट को देखा जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है EIA के उसमें पर्सपेक्टिव में. एनवायरमेंटली एयर, वाटर एंड सॉइल और हैबिटेट और इकोलॉजी को वो कैसे इफेक्ट कर रहा है. सो क्राइटेरिया और मेथोडोलॉजी को डिटरमाइन करने के लिए आइडेंटिफाई लाइक यू हैव टू स्टडी साइज ऑफ द स्टडी एरिया, फिर वो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट कर रहा है, एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है. तो दीज आर द सम क्राइटेरिया और मेथोडोलॉजीज. relative rarity of species, significance में increase as species become increasingly rare or threatened. So these are the इसमें भी एक होता है कि like सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है, एक EB रिपोर्ट सबमिट करना होता है जिसमें सारा बायोलॉजिकली और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आते हैं, कौन कौन से स्पीशीज एक्सटेंट हो रहे हैं या उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा. So over in all, if we are going to wrap it up, so importance of EIA is EIA links environment with development for environmentally safe and sustainable development. EIA provides a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse impact of development projects. EIA enables the decision makers to analyze the effect of development activities on the environment well before the development project is implemented. So it is जैसे अभी दिव्या ने पूछा प्री फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी, तो दीज आर द मेजर्स. वो एक EIA में प्री वाला पार्ट भी है, मिडल वाला पार्ट भी है एंड पोस्ट उसका क्या फिर वर्किंग हो रही है. उसके बाद वो पार्ट आता है EHS वाला कि आप कैसे हर एक चीज को सेफ्टी और वो सारी चीजें डिस्टिंग्विश होते चले जाते हैं. देन EIA encourages the adoption of mitigation strategies in the development plan. EIA makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem. Either it is eco-friendly, either it is harming to the environment or not. So it is eco-friendly or it is very good for the environment or not, that industry is going to establish, or EIA how is going to help the environment. So if I ask you, अगर आप इसमें कुछ एक दो points ऐड करना चाहे, like how, what is the importance of EIA? इसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक आउटलाइन में बोला जाए कि आप क्या समझते हैं इम्पोर्टेंस EIA का, तो anyone can tell me? If anyone want to add? I think no one wants to add. So you don't think so that EIA is important or not? Ma'am? Yeah. EIA is help to reduce the environmental risk in industrial side, ma'am. Okay. And it helps to improve the ecological damage, to know what are we damaging the environment, like that. And it differentiates the process, impact, aspect, both even one table column. It can easily identify which parts of our process is creating environmental damage, how we can recover. It gives mitigation, some methods and time also. And you can help set objectives, target and strategy also, ma'am. Right, okay. Thank you. Yeah, yes, Adarsh. Ma'am, protecting the environment and promoting the sustainable development. Yeah, good. Anyone else?
I think you can add. So this is the overall, in a nutshell, this is the importance of EIA. Although it's a very broad spectrum. Yes, Nishant. Ma'am, I have a doubt. Yes. Can I ask? Yeah, sure. Okay, so पब्लिक हियरिंग के बारे में पूछना था। जैसे कि पब्लिक हियरिंग EIA रिपोर्टिंग में हम मतलब एक पूरे फाइनल डिसीजन मेकिंग तक पब्लिक हियरिंग नहीं होती, तो EIA रिपोर्ट तक हम पब्लिक हियरिंग हो रही है। अगर कोई प्रोजेक्ट में एक पब्लिक हियरिंग होती है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी वो होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, अगर वो बोले कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वगैरह, क्या वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है या प्रोजेक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट कराई जाती है? बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज आफ्टर पब्लिक हियरिंग। तो डिसीजन मेकिंग में अगर वो पब्लिक अलाउ नहीं कर रही, फिर भी डिसीजन मेकिंग में अगर गो थ्रू बोला जाता है कि आप बनाओ, आप प्रोजेक्ट को फर्दर अपने आगे लेके चलो, तो मतलब पब्लिक हियरिंग एंड टू एंड क्यों नहीं है उसमें EIA में? निशांत, इसमें ये है कि EIA में पब्लिक हियरिंग वाला जो पार्ट है ना, अब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता लाइक दैट प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेब्लिश, या तो उसको कुछ ना कुछ टाइम या फिर कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज गाइडलाइंस, आपको ये वर्किंग करनी है दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अदरवाइज दे हैव टू फाइंड द मेजर्स लाइक हाउ वी कैन जस्ट सेट द मेजर्स, उसको कैसे हम मेंटेन। यस आदर्श। Apoorva, let me answer to Nishant. Yeah, yes, sir. Nishant, here the role comes of a EHS manager or head of the Department of Environment in that industry. And before any industry want to go such hearing, public hearing, they has to do the extensive working, social networking and working within that periphery, within that geography, and they must have the sense of the community, what is the feel about that project, right? यहाँ पे एनवायरमेंट मैनेजर का रोल सबसे ज्यादा आता है। वो पूरा एक डिटेलिंग करता है, वर्किंग करता है एंड एक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट मैनेजमेंट को देते हैं। उसके साथ CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की टीम भी साथ में जाती है, प्लस they try to build a networking and connect with the senior persons in that community। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्किंग के थ्रू होता है, और अगर उसको ये फील होता है कि वे लोग इसके फेवर में नहीं है या इससे उनको एजिटेशन है और हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते एज ए इंडस्ट्री, then that report I think gives a more clarity to the management, we should not move for that project or for the public hearing। और ये बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए हम जो है सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सोशल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। मतलब जब लैंड ग्रीन होती है, कोई वहां पे प्रोजेक्ट नहीं होता है, एट दैट टाइम अ एनवायरमेंट मैनेजर हैज टू गो देयर एंड डू द सोशल फ्रंट असेसमेंट बिफोर इवन टू गो टू द मिनिस्ट्री। तो ये अगर नहीं है तो कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहीं पे ही जो है एनवायरमेंट मैनेजर का सबसे बड़ा रोल आता है, बाकी तो फॉर्मेलिटीज होती हैं। सो सर, पब्लिक हियरिंग इम्पोर्टेंट स्टेप है मतलब EIA प्रोसेस में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर ये उन्होंने यस सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए थिंग वेयर EHS manager has to show their capability and capacity, how is going to be understand this subject, deliver the key points to the community, and come back to the management कि these are the challenges we may face। बिकॉज अगर वहां पे एक सेटअप लग गया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया है, वहां पे लोकल कम्युनिटी के लोग आ गए हैं, वहां पे पूरा एक सेटअप लग गया है पब्लिक हियरिंग का, और वहां पे उस टाइम पे कम्युनिटी अगर अपनी वॉइस रेज करती है तो इसका मतलब हमने सोशल नेटवर्किंग नहीं की। आई डिड ऑलमोस्ट 3 EIA पब्लिक हियरिंग इन माई कैरियर, बट उससे पहले हमें 6 महीने का पूरा असेसमेंट करना पड़ता था पूरे कम्युनिटी का और उनको समझाने का।
Yeah, continue please. ओके सो ऑलरेडी इसमें ना जो हम निशान एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान देते हैं ना, तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, वो पब्लिक हियरिंग के अलावा हो ही नहीं सकता. दीज आर द मेजर पर्सपेक्टिव जो हमें ड्यूरिंग द EIA बहुत ज्यादा ध्यान रखने होते हैं. So that was from all from my side. I hope it is clear for you all. Thank you so much. If anyone is having any query, they can ask. Yeah, yes, Adarsh. मैम मैं एज अ EHS ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा था मैम दिल्ली मेट्रो में. तो वहां पे क्या होता था ना कि मैम CPCB से या CPCB से कुछ इन्वायरमेंट ऑफिसर आते थे. तो वहां पे आपका स्टैक मॉनिटरिंग कैसा है, आपका एयर क्वालिटी कैसा है, वाटर क्वालिटी कैसा है, और जो भी मतलब वहां पे कॉन्क्रीट वेस्ट निकल रहा है उन सब पे मैम वहां पे वो पेनल्टी इम्पोज करके जाते थे. उसके कंप्लायंस के लिए फिर मैम हम क्या करते थे, साइट पे जो भी वो बताते थे उसको कंप्लीट करके जाते थे और फिर उनकी पेनल्टी भी पे करते थे मैम, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ EHS ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर मैम. Okay. तो ये भी एक है मैम रिपोर्टिंग EIA की. Great. मैम आई हैव अ डाउट. तो जब EIA प्रोसेस पूरा हो जाता है तो पोस्ट EIA भी कोई मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है इसमें कि भाई जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स ही चल रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो उसके बारे में जरा बताइए एक बार कि क्या रहता है, किस तरीके से रहता है. वो सारी चीजें निशान बाद में EHS के अंडर में ही आता है. यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजर की वर्किंग है. EIA का आपका पूरा कंप्लीट हो गया वर्किंग. देयर आर सम स्टेप्स एंड लाइक हमने लास्ट पढ़ा रिस्क असेसमेंट, राइट. सो देयर इज अ हायरार्की, कंप्लीट हायरार्की कि वहां पर फिर EHS मैनेजर उसको फिर कैसे डील करता है. तो ये सारी चीजें फिर वहां पर डील हो जाती हैं. यस दिव्या. We can't hear you. I think you are on mute. Sorry ma'am, I'm asking कि resettlement and rehabilitation is a part of EIA or not ma'am? हाँ, रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन जो है वो उसका पार्ट है. रीसेटलमेंट आप किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो? मैम जैसे कि जितने भी डैम्स प्रोजेक्ट होते हैं, वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो सडनली मतलब उसका जब इम्पैक्ट मतलब प्रोसेस किया जाता है कि मिटिगेशन आफ्टर मतलब मिटिगेशन प्रोसेस जब अप्लाईज होते हैं तो एक सॉल्यूशन बेस्ड ये दिया जाता है कि ये मतलब आप वहां से या तो कहीं और उन्हें प्लेस दी जाती है. तो उस सेंस में मैम कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ EIA और वो एज अ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा. वो सारी चीजें एनवायरमेंटली पहले दिव्या देखा जाता है. दैट कंप्लीट कोर एरिया, दैट बफर जोन के उसमें जहां पर भी वो इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट एस्टेब्लिश होने जा रही है वहां पर कोई भी एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड व्हाट आई हैव मेंशन ग्रीन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, अगर वहां पर कोई भी एनवायरमेंटल एक्टिविटी या फिर ऐसा कुछ एस्टेब्लिश्ड है तो उसके नॉर्म्स अलग हैं. और रीसेटलमेंट वाला चीज जो है फिर वहां पर वो अप्लाई हो ही नहीं सकता क्योंकि इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड देयर तो वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. आई थिंक अपूर्वा, दिव्या का जो क्वेश्चन है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है. एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए दिव्या यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो भी रीसेटलमेंट है, रीशिफ्टिंग है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट लोकेलिटी, वो पहले से ही असेस होता है, उसका सब कुछ डिटेलिंग होता है. और जब वो हो जाता है तभी वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, नंबर 1. नंबर 2, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी कोई अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो भी उसी का पार्ट रहता है. तो आदर्श ने एक इनपुट दिया था ना कि उनके पास CPCB के लोग आते थे, वो पेनल्टी डालते थे. तो वो उसी का पार्ट है. दे आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज जो बने हैं, जिसके बेसिस पे पूरा प्रोजेक्ट आगे चल रहा है. जो गाइडलाइंस बनी है अगर वो मीट नहीं कर रही है तो दे कैन रेज द पेनल्टी. ओके, तो मैम हम ये कंसिडर कर सकते हैं ना कि रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन इज अ पार्ट ऑफ EIA. वी कैन, बट पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, बट वी कैन. ओके ओके. एनीवन Ma'am, एल्स? किसी का कोई? या भुवनेश. ma'am, as an EHS officer, I can prepare EIA report, ma'am. Who will verify? For example, a hydro plant,
or rare birds and habitat in that area, but I will write there is nothing in that place, so we can construct the plan. Who will verify back the report, ma'am? I couldn't get you, Bhuvnesh. Can you ask me again? If I prepare my EIA report, who will verify back, ma'am? I will run right or wrong. For example, in Tamil Nadu, Anamale is rarest elephant are living, ma'am. I plan to construct the industry. I am writing the report. There is no elephant in that area. Then who will check or verify back my EIA report, ma'am? I don't know. I couldn't get your question. I think मैं जितना समझ पा रही हूँ, you are saying if you are preparing any EIA report, who is going to verify that, right? Yes, ma'am. Okay. So अभी हमने डिस्कस किया था ना, वो एक पूरा प्रोसेस है जो EIA रिपोर्ट होने के बाद वो आपका सेंट्रल अथॉरिटीज के पास जाता है या फिर स्टेट अथॉरिटीज के पास जाता है, जहां से उसको आपको अप्रूवल मिलता है.